नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हाउ इज एवरीवन? संडे गोइंग? हम दोनों की तरफ से आपका स्वागत है। पहले लाइव शुरू से करने से पहले आप लोग लाइक ठोकिए, क्योंकि आपको समझा दूं फिर से कि यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे चलता है। जितना भी आप लोग लाइक ठोकेंगे, द मोर लाइक्स यू प्रेस, द मोर दिस वीडियो, दिस चैनल, द रीच विल इंक्रीज। सो प्लीज, बिफोर सेइंग एनीथिंग, बिफोर कमेंटिंग, स्मैश दैट लाइक बटन। बाकी आप शुरू करिए। अरे मैं क्यों, आपका चैनल है, आप शुरू करिए। पर ये बात मेरा है नहीं है, कि हम दोनों का चैनल है। देखिए, मैं शुरू करूं या ये शुरू करें, एक जो इंसान है जो हमेशा शुरू करने में तैयार रहते हैं वो है सूर्य कुमार यादव। फिर से आप टूर्नामेंट चेंज कर लीजिए, कप्तान चेंज कर लीजिए, टीम में बदल दीजिए, सूर्य कुमार यादव रुक ही नहीं रहे हैं और आज फिर उन्होंने दिखा दिया कि व्हाई ही इज सो फिनोमिनल। मतलब सूर्या यार, इट्स इनक्रेडिबल क्या कर रहे हैं, जिस तरह के वो शॉट्स खेल रहे हैं। और एक चीज जो हमेशा जेनी जो स्टैंड आउट करती ना, वो ये मुझे लगता है कि यार उस पे और सब स्ट्रगल कर रहे हैं उस पिच पे। ऐसी बात नहीं कि दूसरे बड़े जा जाके बड़े शॉट्स लगा रहे हैं वहां पे और सूर्य कुमार यादव भी कर रहे हैं। Nobody else is being able to play bat like he bats, and you still see this phenomenal performance. Yeah, unbelievable. राधे चार वाक, क्या नाम है भाई? कह रहे हैं हमें एल्गोरिथम को हराना है। कम ऑन गाइस, स्मैश द लाइक बटन। थैंक यू राधे, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं यार। स्मैश दिस लाइक बटन, ओके? द मोर लाइक्स वी गेट, द मोर टाइम्स यू गाइस वाचिंग दिस प्रेस दैट लाइक बटन, द बेटर दिस चैनल्स रीचेस और हम ज्यादा लोग तक पहुंच सकते हैं। बट जिस तरह से सूर्य कुमार यादव बॉल को बाउंड्री पार करा रहे हैं, मतलब इट वाज एक्सपेक्टेड। बिकॉज आप लोग तो जानते होंगे कि हमारे जो टॉप 3 है, यानी कि रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली, वो नहीं है इस सीरीज में। A lot of players, in fact, have been rested. Some, like we said last time, probably will never play for India in this format again. But सूर्य को जब ब्रेक नहीं मिला था, तो हम लोग बात करते हैं यार कि सूर्य is probably that player right now जो कि सेलेक्टर से बोलेंगे, द्रविड़ से बोलेंगे, लक्ष्मण से बोलेंगे, पंड्या से बोलेंगे, भाई मुझे खिलाओ। मुझे इतना समय के लिए वेट करना पड़ा कि आई एम विलिंग टू प्ले एवरी मैच, एंड लुक व्हाट हैपेंड, ही गॉट अ चांस टू बैट एट 3। और मेरे हिसाब से आप बताइए, दिस इज हाउ अ नंबर 3 शुड बी बैटिंग इन टी20 क्रिकेट। This is how number 1, 2, 3, 4, 5 should be batting. 3, मेरे को लगता है कि हर इंसान को इस वक्त ऐसे ही बैट करना चाहिए। एंकर रोल का जो एक बात लोग पूरी दुनिया करती रहती है, ये देख लीजिए जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता है वो एंकर, उसके टीम में कोई एंकर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सब इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, सब बड़े-बड़े शॉट्स खेलने वाले खिलाड़ी हैं। और जो टीम्स ये एंकर रोल में विश्वास रखती है, वो आज जो 2 टीम्स थी, एक इंडिया और एक न्यूजीलैंड, आप देख लीजिए यहाँ पे बायलैटरल सीरीज खेल रही है, सेमीफाइनल में आउट हो गई। तो टी20 में एंकर रोल का कोई जरूरत नहीं है। और सूर्य कुमार यादव आपको दिखाते हैं कि कैसे इस गेम को खेलना चाहिए। पर जेमी, इट्स इजियर सेड देन डन आल्सो। एक होता है कि सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसे खेलना चाहिए, पर नहीं खेल पा रहे ना। अच्छे बड़े-बड़े खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे। क्यों नहीं खेल पा रहे? बिकॉज़ दिस गाय has been phenomenal. That is why he is such a great T20 player कि भैया और कोई नहीं कर पा रहा है। इतना आसान होता तो कोई और कर लेता। बिल्कुल, बैटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। मतलब शायद एबी डिविलियर्स ही ऐसे बैट्समैन थे इनसे पहले, बट द वे ही इज बैटिंग नाउ, आई मीन आई वुड वेजर टू से दैट ये एबी डिविलियर्स से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। एवन टारगेरियन ने एक सही मुद्दा उठाया, कोहली शुड ओपन एंड स्काई शुड बैट 3। आई विल एब्सोल्युटली एग्री विद यू मिस्टर टारगेरियन कि Virat Kohli has been fantastic in the last 2.5 months, especially since the Asia Cup. He got runs, and what he's doing, there's no reason that he cannot, in this current form, in this current mind space, not do the same thing while opening. Let Virat Kohli be that guy who bats out 20 overs. अगर आपको वही टेम्पलेट चाहिए, and सूर्य कुमार यादव is your best batsman. और अक्सर ये कहा जाता है कि क्रिकेट में जो भी फॉर्मेट हो कि your best batsman should be facing the most balls. And while I don't think he's an opening option, I think he's best suited at number 3. So let Virat Kohli, bilkul drop KL Rahul, let Virat Kohli open. And but I don't think you're so convinced about that, are you? नहीं, फिर ऋषभ पंत को कहाँ खिलाओगे आप? खिला रहे हो आप ऋषभ पंत? मैं कितनी बार कह चुका हूँ दोस्तों, अगर ऋषभ पंत आपके टॉप फॉर्म में नहीं आते हैं, तो फिर वो आपके T20 11 में नहीं आएंगे। वही है, see they're not going to drop Rohit Sharma because he's been given this long rope and he's the captain, right? But KL Rahul right now is just struggling, so maybe he plays a few more series. If KL Rahul struggles or if Rohit Sharma struggles, आपको दोनों में से एक को तो drop करना पड़ेगा. Rather than go for someone else, let Virat Kohli open. He's opened before also in IPL. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो कि मैं यहाँ पे सबसे पूछ रही हूँ कि क्या आप विराट कोहली को
2024 T20 वर्ल्ड कप खेलते देखते हैं? 2 साल है, 2 years from a little under 2 years in the West Indies, 2024 June July. क्या विराट कोहली अपने आप को फिट रख सकते हैं? We would assume yes. Does he have the hunger? Absolutely. But Virat Kohli is a 3 format player. I still think he has 3 years in him. But is he going to be there in your team 2 years from now? इस वक्त अगर आपको T20 खिलाना है और T20 टीम बनानी है, the only thing you should be looking at is that next World Cup. Absolutely. जो खिलाड़ी उसमें खेलेंगे उन्हीं को आपको T20 में देखना चाहिए और वो खिलाड़ी मोर ऑफन देन नॉट सारे आपके जो यंगर लॉट हैं वो होंगे। तो आपको जैसे आज के मैच में अब आपको भुवनेश्वर कुमार को आप क्यों खिला रहे हैं इस सीरीज में? आप उमरान मलिक को आज आपने क्यों नहीं खिलाया? क्या कर क्या रहे हो आप? मतलब ये मुझे ये समझ में आना चाहिए ना, वेयर इज द थिंकिंग ऑफ दिस? You should be right now, and it's similar thinking with New Zealand, but New Zealand की मैं सोच सकती हूँ because न्यूजीलैंड में उस तरह का टैलेंट नहीं है जो इंडिया में है, जहाँ पे इतने लोग वेट कर रहे हैं आपका। तो मैं समझ सकती हूँ कि they are going to still play Tim Southee who took a hat-trick by the way, but I'm saying what should be your thinking? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इंडिया की क्या थिंकिंग होनी चाहिए इस वक्त जो अब T20 सीरीज अभी खेलेंगे आगे? Will this all the T20 series should be around कि भाई हम वर्ल्ड कप में किसको खिलाएंगे और उस टीम को बनाने के लिए आप वो सीरीज को उस तरह से अप्रोच करोगे या आप सीरीज बाय सीरीज बेसिस खेलते जाओगे? I think the answer presents itself. आपका जो सवाल है क्योंकि पिछले 12 महीने में I mean I'm talking about पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप से लेकर इस साल के T20 वर्ल्ड कप से लेकर ये जो 7-8 बायलैटरल सीरीज थी या जितने भी थे उसमें क्या था? रोटेशन, रेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटिंग। नतीजा क्या था जब आपने वही घिसी-पिटी क्रिकेट खेला वर्ल्ड कप जाके, राइट? सो इफ यू आर बिल्डिंग टीम्स अराउंड बायलैटरल फिर तो आप भूल जाओगे वर्ल्ड कप खेलना, राइट? दिस सीरीज इज अ ग्रेट स्टार्ट। मानता हूँ एक मैच वॉश आउट हो गया था पहला मैच, but this series is a great start to reset the clock, you know. बेशक आप सीनियर प्लेयर्स को अलविदा कराइए। I agree with you. Bhuvneshwar should not have played this match because he's had a great year overall. Perhaps he needed a break. This is a great series. Now, Umran Malik is watching. चलो एक match wash out हो गया. What is Umran Malik thinking? You know, you want to play these guys before it's too late. You know. हाँ मतलब आपको जो भी अगर आप ट्राई भी करना चाहते हो, अगर आप यंगस्टर्स को इस वक्त ट्राई करना चाहते हो, तो वो यंगस्टर्स को आप अभी ट्राई कर सकते हो। उमरान मलिक को आप अभी ट्राई करोगे, उसके आगे दूसरे जो आएंगे प्लेयर्स उनको आप अभी ट्राई करोगे ना। अब यहाँ से आप बिल्डअप कर रहे हो, Correct. तो उसमें आप अगर उन खिलाड़ियों को खिलाओगे जो शायद नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप में अगला, तो फिर आपकी फिर से वही थिंकिंग हो जाएगी। करेक्ट। तो आपको अभी से वो बात करना पड़ेगा। करेक्ट। तो हालांकि अभी मैं ये भी मानती हूँ कि इस वक्त हमें सिर्फ सूर्यकुमार यादव की बात करनी चाहिए। इससे पहले हम आते हैं, पहले कुछ कमेंट लेते हैं। गौरव पटेल कह रहे हैं जय भाई प्लीज स्ट्रीम विद अंगद भाई फ्रॉम बेबी ओवर। आई सॉ वन और टू ऑफ योर स्ट्रीम्स। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। भाई ऐसा है मैं खुद तो अंगद के पास नहीं जा सकता कि भाई मेरे को शो में ले लो। अंगद भाई अगर ये देख रहे हैं तो ही विल गेट द मैसेज, बट क्या होता है कि आई डोंट आस्क हिम, ही डजंट आस्क मी। व्हेनेवर ही इज कम ऑन माय शो, on my chat show, I've had to ask him, and you know, similarly, so the moment he asked me, I'm very happy to do it. But भाई गौरव, I cannot be the one saying भाई मेरे को ले लो अपने शो में। जब अंगद भाई को लगेगा कि मैं उनके शो के लायक हूँ, I'm sure he'll get us back. शशांक फ्यूचर सिंह, hello Jamie. थोड़ा फोकस गया यहाँ पे, I'm not sure what happened, और आप देख सकते हैं तो। शशांक फ्यूचर सिंह, hello Jamie. मेगा नहीं, मेहा जी को ड्रॉप करिए। मेहा phenomenal batting by Sky, बिल्कुल। वापस आते हैं हम इस शो के टॉपिक पे बहुत जल्दी। दीपक सिंह कह रहे हैं क्या पी रहे हो सर जी? हम दोनों ग्रीन टी पी रहे हैं। ये देखिए मेरा तो टी बैग ही लगा है। इससे पहले मैंने अपना टी बैग हटा दिया है, but we are drinking green tea. Gaurav is saying, yep, assuming Virat is in decent form like these days and completely fit, we always need one anchor player and Kohli is best fit for that. Absolutely, we need an anchor like him. And I think like Mr. Targaryen was saying, let Virat Kohli open and see where it goes. But yeah, coming back to Suryakumar Yadav, 111 आप मारते हो 200 की स्ट्राइक रेट पे, और याद भी रखिए कि आखिरी ओवर में he didn't even get to face a ball. You know, the team could have gotten 205, 210. But this is batting by a rare talent, a man who by the time he got his chance at the highest level, he was so ready. Perhaps he'd put disappointment behind him. Perhaps he'd put हाँ कैमरा blur आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? Perhaps he'd put everything behind him. अब कुछ बेहतर हुआ? अपने आप कैसे हो गया ये? Let us know while I keep talking about Sky. I think Sky was so prepared
एंड शायद उनको लगता है कि यार मुझे और समय बर्बाद नहीं करना है. I just want to make the best of my chances, and what a rise. I mean, little over 1 year now, fastest to 1,000 runs, 200s in this format in the span of 6 months. Outstanding batting. I think this takes me back to that time जब 2020 में इनका मैच चल रहा था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ. अब बात करिए, मैं कैमरा को क्लियर कर रहा हूँ. Why is it so blurry? आप लोगों को सबको पता है. एक बार बंद करके थोड़ा सा नीचे करके वो करो शायद, मतलब आई डोंट नो. अपने आप था, कैमरा हिला भी नहीं, अपने आप हो गया. Very weird. Anyways. Okay, now we're back. Fantastic. So, if you remember the time when Suryakumar Yadav for Mumbai Indians was batting, and that year 2020 he was having a phenomenal year. He was scoring a lot of runs, and they were playing against Royal Challengers Bangalore. और एक इंसान ने उनको ऐसे आंखें दिखाई थी जिसके बारे में उन्होंने बात भी किया था. उसके एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था. जब मैच को जिताया उन्होंने बोला मैं हूं ना. हम सबको वो याद है. आज ये सिचुएशन है कि वो बैट्समैन जो कि उनको इस तरह से आंखें दिखा रहा था कि भैया डोंट ट्राई टू टेक एनी ट्रबल विद मी, आई एम विराट कोहली, वो आज इनको ऑ में देखता है. वो आज ऐसे बोलते हैं कि भाई दिस इज सूर्यकुमार यादव बैटिंग लाइक you're बैटिंग इन अ वीडियो गेम. Today also he said that it was a phenomenal innings, and they've done, both of them have been part of these really very good match winning partnerships in recent times. तो वो explain करता है कि वो कितना अच्छा खेल रहे हैं. जहाँ विराट कोहली उनकी ऑ में है, जहाँ विराट कोहली ऐसे ऐसे कर रहा है, पूरी दुनिया ये विराट कोहली को करते थे, अब वो समय, सूर्य का समय चल रहा है दोस्तों. बहुत ऊपर है भाई. बिल्कुल ऐसा है कि दोस्तों 82 people are watching, only 34 likes. We need 82 likes. जितने भी viewers हैं दोस्तों इस live stream के, now it's fallen to 79, शायद लोग बोर होंगे. जितने भी हमारे पास viewers हैं, we need that many likes. YouTube algorithm only understands the like button smashing, so please smash that button. Deepak Singh कह रहे हैं Sky is first full-fledged T20 Indian player. Bilkul, we spoke about this last time also. He has come along at a time where he is the first full-fledged T20 player for India. Bilkul, आपकी बात से सहमत हूँ. I'll give this to you because I know how big a fan you also are of Ravi Bishnoi. किधर है, समझ नहीं आ रहा है. Again, I'm shocked. यार ये वो टीम है जिसके टीम मैनेजमेंट युजवेंद्र चहल को पूरा वर्ल्ड कप नहीं खिलाते हैं. उसको पूरे मैचेस उससे पहले बायलैटरल सीरीज में खिलाने के बाद, जहां पे कि वो अच्छे बॉलिंग कर रहे थे और विकेट भी ले रहे थे, इसलिए कि उनको लगता है कि रविचंद्रन अश्विन बेटर बैटर हैं और वो बैलेंस आउट करते हैं टीम को. तो उस टीम मैनेजमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? वह क्या आपको लगता है वो रवि बिश्नोई जैसे प्लेयर पे इस वक्त पंट करेंगे? ये मैं बता रही हूँ ना जेनी, ये आपने सिलेक्शन कमेटी को निकाल दिया, उनको सैक कर दिया, बट डू यू रियली थिंक दैट सिलेक्शन कमिटी is taking the decisions of selection? I have had conversations, and this is strictly like, I'm not going to give details of who those people were within the BCCI. I've also had conversations with members of that selection committee who on the day of the selection have no idea what the team is going to be. Suniye. They have no idea, or the whole team is decided by the captain and the coach. It's not the selection committee, especially not this selection committee. It's a different thing जब आपके पास ऐसी selection committee हो जाते दिलीप नाइक सरकार हो या पहले की जब powerful players within the board, former players who are like, who know कि भाई हमसे पंगा, मतलब उनसे ज्यादा वो नहीं करेंगे, ना कि ऐसे कि भाई उनको किसी को भी बना दो. हाँ, किसी को भी बना दो और फिर उनसे. I'm not saying that that Chetan Sharma probably is not that. I'm not saying that, but all I'm saying is कि भाई उनके पास इस वक्त कोई पावर नहीं है. इस वक्त पावर जो था सौरव गांगुली के जाने से पहले उनके पास था, राहुल द्रविड़ के पास है, रोहित शर्मा के पास है, कैप्टन डिसाइड. उससे पहले विराट कोहली के पास था. He was deciding what the team is going to be. So you're saying it comes down to what basically what? Yeah, it comes down to the एक दो जो players हैं वो selection committee decide कर लेती है domestic में जाके देख के, पर ज़्यादातर आपका जो भी है वो सब कुछ the captain and the coach decides, yeah, or the president who was sitting in selection committee meetings earlier. Yeah.
CFC Blues कह रहे हैं सूत्रों के हवाले से, बिल्कुल सूत्रों के अनुसार है. He's also asking what happened to Kyle Jamieson. Kyle Jamieson, my friend, CFC Blues. Not sure what your real name is, but he is on the mend from injury. Apparently, he's almost back to full fitness. So थोड़ा समय लगेगा, but I'm sure he'll be back very very soon. He was injured for a long time. दीपक सिंह पूछ रहे हैं सर मैम क्या अब तीनों फॉर्मेट में अलग अलग पेयर होंगे? अलग अलग पेयर शायद इतना नहीं होंगे, पर जरूर मेरा ये मानना है, और आप बताइए, अलग अलग कप्तान की बहुत जरूरत है. The only way I see India succeeding in 2020 cricket is that your team that is playing ODIs and especially Test cricket are not part of it. निकाल दो उन्हें बिल्कुल. T20 स्पेशलिस्ट वाली फॉर्म में, तो जैसे मैं बोल रही हूँ स्प्लिट कैप्टनसी हो, अलग टीम भी हो, जिसमें ज्यादातर आपके खिलाड़ी यंग हो, ज्यादातर आपके खिलाड़ी उस, एक तो आपको यू हैव टू इन्वेस्ट इन ऑलराउंडर्स जो कि अभी इस टीम में नहीं है. तो आप अब अगली जो आप टीम क्रिएट करोगे उसमें आपको ऐसे बैटर्स चाहिए जो कि बॉल डाल सकें. कौन है? We should have as many options. अब यही बात मैं बोलने वाली हूँ कि वो आपको उस तरह के ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे जो कि ये कर सके. जो भले से फिर वो आईपीएल में, अब आईपीएल आती रहेगी, अभी हमारे पास टाइम है, पर आई एम सेइंग दैट शुड बी द थिंग कि भाई आपके पास जो एक है, दे शुड बी रियली बैटर्स, टॉप ऑर्डर बैटर्स हु कैन बोल. आप लोग जो इस लाइव स्ट्रीम से जुड़े हैं, एक तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, लाइक बटन ठोकिए. तकरीबन 100 लोग देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ 51 लाइक्स है. स्मैश द लाइक बटन. और दूसरी बात ये है कि आई वांट टू हियर फ्रॉम यू. आपको कौन लगता है? मेहा ने अभी एक बात करी ऑलराउंडर्स की, which is what Hardik Pandya spoke about, which is what VVS Lakshman, the stand-in coach, he spoke about that. Kaun are you talking about beyond Hardik Pandya? Is Deepak Hooda a viable all-rounder? Is Venkatesh Iyer a viable all-rounder? You know, who are the all-rounders आपको लगता है जो फिलहाल, क्योंकि by all-rounder I mean आपको एक्सप्रेस पेस डालने की नहीं की बात नहीं है. क्या आप मीडियम पेस डाल सकते हो? क्या आप ऑफ स्पिन डाल सकते हो? सुरेश रैना, युवराज सिंह, you know, Rohit Sharma, these guys were part-time spinners. Yuvraj won a World Cup with his all-round skill. We don't have that kind of a spin bowling all-rounder. शायद दीपक हुडा अगर उनको bowling मिले. शिवम दुबे हैं, but वही है. शिवम दुबे, but कहाँ है वो आजकल? कहाँ है? नहीं, मैं यही कह रही हूँ, मैं अभी बैठ के नहीं बता रही हूँ कि अभी निकालो. I'm just saying that should be the way forward. कि आपका जो T20 है ना, वो आपको बिल्कुल अलग तरीके से उसको देखना पड़ेगा. T20 हमें ऐसे अप्रोच करना है, क्योंकि अगर आप कंजर्वेटिव हो जाओगे, और जेमी कुछ भी कह लो यार, जो ज्यादा खिला हुआ होता है ना, एज, व्हाटएवर, you know, reputation, you do, there is some kind of fear in you. T20 is fearless cricket. If you can play that fearless cricket, frankly, I don't care age. I'm not being ageist here. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यार 35 and above he should be allowed. But I'm just saying that if that seems to be a thing where you're afraid of playing T20 cricket, you're afraid of really going out there and, you know, because of your place inside, because of what you've already achieved, you know, all those things. मतलब एक होता है fearless कि भैया आप गए, आपने जाके बैटिंग करी, आज मुझे कुछ करके दिखाना है. Correct. वो वाला जज्बा होता है. एक होता है कि यार आज मैं कैसे करूंगा, I'm playing against Australia or I'm playing against Zimbabwe, England. No, if I'm playing against Zimbabwe and Afghanistan, then I can bat well because उसमें तो not everyone is doing that. Unfortunately, I'm not taking names here because I've been accused of being anti a certain player. तो मैं वहां नहीं जाऊंगा. हाँ, मुझे भी नहीं पता नेहरा क्रिएशन के उमरान वाले को कब चांस देंगे. अगर अभी चांस नहीं दे रहे हैं तो फिर कब देंगे? नहीं पता. राकेश कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, सॉरी, डू यू थिंक सूर्या आने वाले टाइम में एक शाइनिंग स्टार साबित होंगे? भाई वो ऑलरेडी सूर्या चमक रहा है. सूर्या इज शाइनिंग. ही इज द बेस्ट बैट्समैन गोइंग अराउंड नाउ इन दिस फॉर्मेट एंड ही इज 31. बट जो जैसे कि मैंने कहा था लाइव स्ट्रीम में थोड़े समय पहले, जो एक भूख, एक चाह, जो एक डेडिकेशन था कि भाई मुझे मौका लेट आया. आई प्रॉब्ली शुड हैव बीन पिक्ड 4 years ago, 3 years ago. मौका नहीं आया. आई एम गोना मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम. ही इज डेफिनेटली, ही इज नंबर 1 रैंक्ड बैट्समैन इन दिस फॉर्मेट. तो शाइनिंग स्टार क्या है? वो एक he's like a full Diwali fireworks display. And definitely I think he will definitely play 2 years from now. There will come a time जब runs थोड़े रुक जाएंगे, जब वो struggle करेंगे. It's natural. He's had a fantastic run, but the kind of faith this team has in him and the way he's batting, I think he's going to do very well at next year's One-Day World Cup. He might even play Test cricket before we know it, and definitely he'll be there in 2024. Absolutely. आज चुम्बन गिल को खिलाना चाहिए था. नहीं.
शुभमन गिल आपकी टी20 टीम में फिट नहीं होते। देखिए आप संजू सैमसन जैसे फ्लोटर को आप उन्हें चांस नहीं दे रहे तो शुभमन गिल कैसे आएंगे फिलहाल? शुभमन गिल had a fantastic run this year in ODIs and they've dropped him from the ODI team. They put him here. You open with Pant, open with Kishan, open with Shreyas. वही मैं कह रही हूँ ना, अगर आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं ओडीआई टीम से और आप उनको यहाँ डाल रहे हैं तो खिलाने के हिसाब से डाल रहे हैं. He has been your best batter in ODIs this year. Correct. He and Shikhar Dhawan have scored the most runs. So then He is, why I is think, better than Shikhar Dhawan. हाँ मैं कह रहा हूँ वो जो एक फॉर्मेट में चल रहे हैं आपने उन्हें उस फॉर्मेट से हटा के यहाँ क्यों डाला? यहाँ तो बेचारे का चांस ही नहीं आएगा ना. They have gone with Pant. I'm saying they will open with Samson. They'll open with Gaikwad before they'll open with Shubman Gill. तो शुभमन गिल का सिलेक्शन यहाँ इस सीरीज के लिए इस T20 स्क्वाड में मुझे थोड़ा अजीब लगा. हिमांशु सिन्हा बोल रहे हैं शुभमन गिल है जेमी ओडीआई स्क्वाड में, ऐसी बात नहीं. अगर इंडिया की फास्ट बॉलिंग सुधर जाएगी तो फिर इंडिया की टक्कर का कोई नहीं. बिल्कुल बॉलिंग है, डेप्थ है, बट आप गलत बॉलर्स को खिला रहे. नेहरा क्रिएशन, भाई आपका नाम क्या है? नेहरा क्रिएशन, आशीष तो नहीं है. आई थिंक सर संजू and ईशान is equal to opener. बिल्कुल I agree with you. I would want to see. I was kind of surprised in fact that Samson didn't play today. और ऋषभ पंत के बारे में थोड़ा बात करना पड़ेगा. आज उनके पास एक बेहतरीन मौका था, उन्होंने रायता फैलाया. 13 बॉल खेल के मात्र 6 रन. यार समझ में नहीं आता है ऋषभ पंत का सीन क्या है, मतलब होता क्या है? Because he is a batter who's tailor-made for this. Fearless है, unorthodox shots ऐसे शानदार तरीके से वो भी खेलते हैं. टाइमिंग बहुत अच्छी है. एक जो होता है ना लेंथ को इतनी आराम से पहले गेस कर लेते हैं क्या शॉट करना है. मतलब he's everything about the way Rishabh Pant plays is perfect for T20s. And yet T20 इंटरनेशनल्स में क्या हो जाता है ऋषभ पंत? बिल्कुल, मैं तो तकरीबन 1 साल से ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, 10 महीने से कह रहा हूँ कि शुभमन गिल अभी T20 वर्ल्ड कप में फिक्सचर T20 स्क्वाड में 11 में वो फिक्स नहीं है. जहां इस प्लेयर ने ऑलरेडी अपने आप को he cemented himself in my view as India's greatest test wicketkeeper batsman in the span of a few years. But one days में चलो उन्होंने जो 100 लगाया था, but T20 में I'm talking about Rishabh Pant. Pant is already India's greatest test wicketkeeper batsman. He has done in test matches with no keeper before him has done in 100 odd years या जो भी है. One day में चलो अपने आप को जूझ रहे हैं वो, he finally got 100. But T20 में, despite getting such a long rope, he's so bad in T20 cricket. He's not had a strong IPL season now for a few years. I don't think Rishabh Pant should be playing T20 cricket for some time. Let him go back to domestic. Let him have 2 strong, and by strong I mean 450 to 550 runs. ऑप्शन है सैमसन को खिलाइए, ईशान किशन को खिलाइए. ऋषभ पंत अभी T20 11 में नहीं होना चाहिए. He had a great chance today, but he got 13 balls. That's like Kane Williamson level of struggle, yeah. तो वो level of struggle अलग है. नहीं, with that talent, with that approach, cavalier approach. Funny channel is saying India में like 4 pace उमरान, मोहसिन, बुमराह and वसीम बशीर 150 plus है, ऑप्शन है, आप खिलाइए उन्हें ना. उमरान मलिक has had a fantastic IPL about 5-6 months ago. Played a couple matches in that Ireland and England tour. He should have gone to the World Cup because you need that one bowler who can clock 150. I hope कि उन्हें जो तीसरा मैच है उन्हें वहाँ मौका मिले यार. न्यूजीलैंड लेके जाने से कोई फायदा नहीं है. अगर ले जा रहे हो तो उनको खिलाओ. भुवनेश्वर को बिठा दीजिए. अभी भुवनेश्वर कुमार का क्या मतलब क्या आप उनको 2024 वर्ल्ड कप में खिलाएंगे? अगर नहीं खिलाएंगे तो फिर जो ये नए हैं पेसर्स, इनको ट्राई करिए, इनको एक्सपीरियंस दीजिए, इनको मौका दीजिए, इनको कॉन्फिडेंस दीजिए. आज दीपक हुडा को आपने बॉलिंग कराई, भले से वो 3 ओवर के 2.5 ओवर्स उन्होंने खेले और उन्होंने 4 विकेट लिए. उनको कॉन्फिडेंस मिला है अपनी बॉलिंग पे. कप्तान को उनकी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस आया है. आप जो हमेशा से बात करते आ रहे हो कि हमें ऑलराउंडर की चाहिए, तो आपने इनको जब चांस दिया दीपक हुडा को, आपने इनसे बॉलिंग नहीं कराई. आपने जब इनको बेचारे जब 3 पे चलने लगे तो आपने कहा नहीं आप नीचे आ जाइए क्योंकि 3 पे हमारे बड़े खिलाड़ी आ गए हैं. अब आपने आज इनको बॉलिंग कराई है पर इनको आज नीचे बिठा दिया है फिर से. कहाँ पे चाहते कहाँ है भाई? करना क्या चाहते हैं आप? आपने उन्हें 2 मैच, एक वर्ल्ड कप में पर्थ में उस बाउंसी ट्रैक पे आपने उन्हें खिलाया 6-7 पे. पहली बॉल पे आउट हुए, आज पहली बॉल आउट हुए because he's coming in a time where he's not used to it. Deepak Huda scored all his runs this year batting for Lucknow at 3 and 4. आप उन्हें खिला रहे हो 7 पे. उनकी बॉलिंग अच्छी है, वो पार्टनरशिप ब्रेकर हैं. आप रोहित शर्मा उनको बॉलिंग देते नहीं. आज जब दिया तो पूरे तो उन्होंने 4 विकेट लिए. तो it's about how to utilize
these players. Let's go back to some questions here. Nehra Creation saying मेरा नाम जसवंत नेहरा है, थैंक यू आपने अपना नाम बताया, बीकानेर से हैं, क्या बात है, राजस्थानी आप भी. Vinay saying is Sanju in just for touring? I hope not. I hope he and Umran Malik play that final match day after tomorrow. But yeah, Rishabh Bali saying hello, how are you? We're very fine, Rishabh. How are you? My question is why is ICC not giving more chances to associates like Ireland? हाँ मैं आपकी बात समझ गया. They should because we've addressed this in the last stream also. कि जहाँ पे World Cups की बात है, the host broadcasters do not see these associate level teams as being teams that can bring the fans into a stadium. It looks very bad, and मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस बात से सहमत हूँ. I'm not in support of this, but the host broadcasters and the ICC do not want to have a match between two associates जहाँ पे stadium लगभग खाली है. यहाँ जहाँ पे 100-150 in associates के touring fans. It comes down to that. On the one hand, the ICC is doing a very, very good job in promoting these teams. But two things. Host broadcasters do not want these teams playing too often. और दूसरी बात क्या है? It's the big three, BCCI, ECB, Cricket Australia. जब तक ये तीन boards नहीं कहेंगे कि भाई आप हमारे देश आइए, आयरलैंड जाती है इंडिया, आयरलैंड जाती है ऑस्ट्रेलिया, नहीं, ये teams वहां जाते हैं. At least this year we saw Holland and Netherlands got to play New Zealand and Pakistan. आपको साल में इन टीमों के साथ आपको खुद अपनी टीम्स भेजने पड़ेगी. बेशक आप बी टीम भेजिए, इंग्लैंड आयरलैंड के साथ हार्दिक पांड्या led a B team. So the answer to your question, your name was Rishabh Walia. माफी चाहूंगा. The answer is until the big BCCI, ECB, and Cricket Australia, unless they don't start sending their teams there, the host broadcasters will never be on board. When the big teams play the associates, that's when they get more chances to play. थोड़ा लंबा बोल दिया मैं, sorry. नहीं सही है, आगे पढ़ो. Sunil Yadav, hello sir, why Deepak Huda play as all-rounder? We've already addressed this just right now before you joined. We're not sure why he's batting at 7. It's very strange. सबको पता है कि दीपक हुडा ऑलराउंडर की तरह से खेल सकते हैं, विकेट ले सकते हैं, आज लिए और आज इससे ये भी साबित कर दिया कि भैया मुझे और बॉल दो, मैं कर सकता हूँ. पर अभी तक जब भी उनको मौका दिया था इस पूरे साल में, जब दीपक हुडा को मौका मिला, वो हमेशा तभी मिलता था जब आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो रेस्ट चाहते थे. तो उसमें जहां पे भी बेचारे के नंबर आ जाते थे वहां उनको खिला लेते थे. टीम पे उन्होंने बहुत अच्छा किया, पर टीम मैनेजमेंट ने बोला नहीं कोई बात नहीं, जैसे विराट कोहली वापस आए उनको वहां से हटा दिया गया. फिर जब भी उन्हें लिया लोअर डाउन दी ऑर्डर उनको खिलाते थे, वो रन नहीं. ही इज नॉट. एक ये भी चीज है जेमी, सॉरी मैं डाइग्रेस कर रही थोड़ी सी, पर आप दीपक हुडा की जैसे बात कर रहे हैं तो पहली बात तो आप उनको कहाँ खिलाना चाहते हैं. जैसे आपको पता नहीं था कि आप ऋषभ पंत को कहाँ खिलाना चाहते हैं, आप ओपनिंग कराना चाहते हैं, मिडिल ऑर्डर में वो चलते नहीं है, फिनिशर वो हो नहीं सकते. चलिए आपने ओपनिंग में उनको ट्राई किया, नाउ गिव हिम अ लॉन्ग रोप, थोड़ा उनको करने दो. बहुत कॉन्फिडेंस लो है ऋषभ पंत का इस वक्त. आई डोंट थिंक कि एक या दो इनिंग्स से अब कुछ हो सकता है. वैसे भी आपके पास अब बहुत टाइम है, वर्ल्ड कप में अभी बहुत समय है. आप T20s में उनको खिलाओ, ओपन करने का मौका दो अगर आप वो चाहते हो. If that is something you're hell bent on, अगर यही तो ना, अगर आप चाहते हो, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यार ऋषभ पंत को पूरी तरह से ट्राई करेंगे, इज वेरी वैल्यूएबल टू आवर साइड, हम चाहते हैं कि वो हमारी टीम में रहे, कहाँ पे उनकी पोजीशन हो सकती है, चलो उनको ओपनिंग देते हैं. अगर आप वो चाहते हो तो उनको जगह, उनको अभी चांसेस और मिलनी चाहिए, अभी मत हटाओ. फेल होंगे कोई बात नहीं. ही इज रियली लो ऑन कॉन्फिडेंस एंड आई एम टेलिंग यू दिस आल्सो कि ये शायद उनके ODIs और टेस्ट मैचेस पे भी अफेक्ट करेगा. जो कॉन्फिडेंस है, एक प्लेयर जब डाउन होता है हर फॉर्मेट में डाउन होता है. दूसरी बात, आप इस वक्त इतने कंफ्यूज्ड है कि आपको पता नहीं है आपके फिनिशर कौन है. आज भी हम ये डिस्कस कर रहे थे मैच के शुरू होने से पहले कि आखिर आपके फिनिशर कौन होगा. आप हार्दिक पांड्या को फिनिशर के रोल में देखते हो, आप देखते हो, हार्दिक पांड्या खुद नहीं देखते. वो करते हैं फिनिश, वो गेम्स फिनिश करते हैं जस्ट बाय चांस. ही एंड सूर्यकुमार यादव एंड अप फिनिशिंग द गेम्स फॉर इंडिया. पर वो क्या आपके फिनिशर है? क्योंकि इस वक्त आपके फिनिशर कौन है? आज के मैच में आपके फिनिशर कौन हो सकते थे? हार्दिक पांड्या अगर नहीं चले, पर आई थिंक तो वो होंगे. वो आपको देखना पड़ेगा उस हिसाब से आपको एक फिनिशर, क्योंकि दिनेश कार्तिक तो अब है नहीं, वो वाला सीन गया. तो नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आपके फिनिशर्स कौन है, या क्या आप इवन चाहते हो कि कोई ऐसा फिनिशर हो कि आपके सभी फिनिशर है, सबके रोल वही है. लेटर ऑन के जो 5, 6, 7 पे जो भी आते हैं कि भाई हमारा रोल है ये जाके उस स्ट्राइक रेट से हमें बैट करना है, वो होगा. तो these are all things that they need to discuss. What are your thoughts on it? I don't know. मैं तो कह रहा हूँ आपने 7 महीने एक ऐसे प्लेयर पे
गवाया जहाँ पे he didn't do the job when he was most required. You हाँ. you groomed Dinesh Karthik for a certain job for 6 months, and the guy was an absolute disaster in the T20 World Cup. And now you dropped him like a sack of potatoes. Your finisher, statistically, Hardik Pandya has finished more matches. And I want to add here, finishing means you also finish innings. Hardik Pandya has finished more innings and more matches than Dinesh Karthik has. So Hardik Pandya, वो अपने आप को क्या समझते हैं? That doesn't matter. The team has to say, boss, तुम फिनिशर हो, आज वो नहीं चले, but वो लेट आए आज. Hardik Pandya statistically is your finisher, not Huda, not Pant, not Dinesh Karthik. अभी कौन है आपके पास? आपके पास 2 साल से कम है. अगला T20 वर्ल्ड कप जून 2024 में है. हाँ. आपके पास 2 साल से कम है to figure out these things, just to have players to widen your pool. This is a great series, and again having Deepak Huda back at number 7 doesn't make sense. A lot of comments here about moving Surya. हाँ बताओ. हाँ नहीं वो exactly that moving Surya to number 3. Correct. Seeing Dr. Parichay Soni. बिल्कुल. I don't understand it. क्योंकि I don't understand it. Why? Only thing, the position of Suryakumar Yadav should be decided on who your openers are. Correct. If your openers are openers who can give you the kind of start that T20 cricket demands today, you do not need to move Suryakumar Yadav to number 3. You can let Virat Kohli be there. But if your openers are KL Rahul and Rohit Sharma, please, at the earliest, move him to number 3, and also just not take part in the World Cup 2020 because you're not going to win it. You're not going to win it. बिल्कुल. And वही बात है, बहुत लोगों ने आज कमेंट भी किया है कि दीपक हुडा को कहाँ खेलना चाहिए. Should Virat Kohli open? We already said it. If Virat Kohli is going to play that anchor role, why not give him a better chance of doing it by letting him open? फिलहाल रोहित शर्मा और केएल राहुल एक साथ आप ओपनिंग उनसे नहीं करा सकते हैं. I'm all for Virat Kohli playing the exact same role he's doing. He's doing a fantastic job after a long slump. Let him do that job as opener if you want Suryakumar Yadav to bat at 3. But वही बात है, जैसे कि अभी आपने कहा डॉक्टर परिचय सोनी ने कि अगर सूर्य को यहाँ चांस दिया एक मैच में, 2 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन अगर दोबारा रोहित, केएल और विराट कोहली आपकी त्रिमूर्ति यानी कि आपके टॉप 3 बनने वाले हैं, तो क्या फायदा है? It's a good thing for him to get a chance to bat. But what is your vision? Is your vision for 2024 in West Indies and Florida, US? Is it still Rohit, KL Rahul and Virat Kohli as the top 3 and 3 or 4? Exactly. Again, yes, इस मुद्दे का जवाब हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, because mixed signals. I'm telling you, how can you see them as your top 3 for 2024 World Cup? You might as well just stop playing right now. If this is, or are you seriously telling there's nobody else who can do the job? You failed. You failed in 2 World Cups. That's enough in the time. span of 12 months. Absolutely. That's enough time. That's enough chances. And I'm sorry. Now Ravi Shastri's turned around and saying that break's not good. So he was saying it for Rahul Dravid that you don't need a break. But you want my phone? No, that lady will be calling. No, but I do not. What was I saying now? You've made me all. Yeah, I remember it's 6 o'clock. Though. I have to go. Hey, you're talking about the planning has to start now. No, you cannot be taking the same 2 years down the line. देखो रोहित शर्मा I think वो 37 के होंगे तो अगले T20 World Cup में तो वो शायद ना रहेंगे. Already 8 World Cup खेल चुके हैं. And KL Rahul needs a lot of confidence. But I mean, anyways, I'm also not sure about Virat Kohli. To be very honest. Absolutely. I'm not saying this कि Virat Kohli खेलेंगे उनकी मुझे लगता है वो खुद ही नहीं खेलेंगे. That is my thinking that Virat Kohli will leave one format, I feel, by the next World Cup. That's my thing. Yep, I don't know. That's just my feeling. Maybe I'm wrong. A lot of people were saying that he won't play this World Cup. So maybe I'm wrong. But I'm just saying that, in fact, a lot of people were even saying that Virat Kohli will quit T20s right after the World Cup. But that didn't happen. But I feel like 3 formats are difficult to sustain. Absolutely. You're not getting younger. You're Virat Kohli. You want to excel in test matches. You want to excel in ODIs also. You want to play IPL. It's not an easy thing, to sustain everything. So I don't know how he's going to do it. But if there's one person who can do it, it's Virat Kohli. But can he do it? That's a big question. I don't see it happening. Correct. But we never know. I'm going to take the super chat question. Thank you, Rahul. Rahul Nutaki, am I saying it right? Please correct me if I'm wrong, Rahul. Thank you very much.
India need to revamp the selection process. Absolutely, Rahul. I think you and आप us लोगों and को our एक- viewers. Sorry, no, I'll tell you something that happened with me, and I'm going to just name the selector. It was the chairman of selectors, Chetan Sharma. Now, I even spoke to him right now after the panel was sacked. But I'll tell you why I feel like they absolutely had no idea. First of all, they never believed in talking to the media. But that changed with Roger Binney coming in as the president because they gave the press conference abhi just before the squads for New Zealand and Bangladesh were announced, right? Having said that, you all remember the confusion after Jasprit Bumrah was injured. ये बात हो रही थी कि भाई उनकी जगह कौन जाएगा तो we in the media were also keen to find out कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा and people were reporting all kinds of things because BCCI is so source driven मतलब हर चीज सूत्रों के हवाले से जैसे अभी कोई बता रहा था comment section में वैसे ही मिलती है I'm not kidding but even I when I get my information I cannot say because that's the first thing they say that please don't we don't want to be revealed that's how BCCI functions we all know it. Anyway, but with Chetan Sharma, I was very clear. I said, if you are the chairman of selectors, you should know what your players are going to, who are the players who you're going to send. तो एक समय पे जब बात ये होने लगी जेमी, you know of this story, is कि भाई जसप्रीत बुमराह के वो नहीं जाएंगे तो उनकी जगह कौन जाएगा? अब उसमें बड़ा कंफ्यूजन होने लगा कोई कह रहा था कि मोहम्मद शामी ऑलरेडी चले गए हैं मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर बाद में जाएंगे और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था I was trying to get in touch with BCCI. I finally did and I put that story out. By the way, a lot of people got that wrong because they said वो सब चले गए but they were all here. थोड़ी देर में निकले हैं सिराज भी थे उसमें ठीक है मोहम्मद शामी पहले निकल चुके थे क्योंकि वो टीम का हिस्सा होने बनने वाले थे तो इस पे जब ये सब चल रहा था कंफ्यूजन मैंने चेतन शर्मा को फोन किया मैंने बोला सर can you tell me about this thing what is happening is who's going in place of Jasprit Bumrah can you just tell me he had a very curt response saying how do I know why don't you just ask the BCCI I'm not kidding this is the chairman of selectors who's telling me that I should be asking BCCI who is the player who will be selected in place of Jasprit Bumrah I was shocked I was like sir but you are the chairman of selectors he's like so I don't know. Please ask the BCCI. And he cut the call. ये हाल है भाई. ये हाल है आपके चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर के जिसको ये नहीं पता और उसी दिन गए हैं मोहम्मद शामी पहले वो दिन या उसके अगले दिन गए हैं उनको ये नहीं पता कि जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट कौन है और मुझसे इतने मतलब उसके साथ बोल रहे हैं कर्टली कि भाई आप जाके बीसीसीआई से पूछिए तो ये एक वो भी है कि बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है ये हमने कितनी बार सुना हुआ है इतने सेलेक्टर्स से हमारी बातें हो रही हैं one of the poorest selection committees I've seen in my 17 odd years Rahul's given another very sweet super chat thank you Rahul really appreciate it thank you so much as I said before Australia chief selector was George Bailey retired in 2018 India needs selectors. Absolutely. You need someone younger who's played. There's another comment that just came before this about from Pranav is saying India need a coach or someone who's an excellent player, manager, strategist. I think it's just that you don't necessarily need a coach, in the traditional sense. T20 format mein aapko ek man manager chahiye. I think Ravi Shastri, to be fair to him, he was a much better man manager than we've seen the Rahul Dravid. Rahul Dravid may have more tactical acumen and may be a better strategist. But getting the best out of your players, keeping your players, especially in this high pressure situation, keeping the players in a good space. I think you need someone like that. So, is there a term which we can attach to such a role? I don't know. You might call it man manager. You might call it a life skills coach. I don't know what it is, but someone who gets the best out of players, not just tactical. Tactics जगह है, but Sorry, नहीं मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोच की क्या what are not just the responsibilities एक कोच के अंदर क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए क्या ऐसी attributes होने चाहिए जिसकी वजह से वो एक कोच बन सकता है अच्छा उसमें बहुत सारे attributes राहुल द्रविड़ के बहुत अच्छे हैं I'm not saying that Rahul Dravid is a bad human being or a bad person like he's very nice he's been a brilliant player we all love him but as a coach have you done the job that is expected of you and I think he needs to be criticized he needs to be we can say this that boss there are some decisions
that were not right. बिल्कुल So I'm saying कि एक बिल्कुल होता है कि trolling them endlessly, we don't believe in that. But I genuinely think that the questions need to be asked because they are the ones who are taking that decisions, which is Rahul Dravid and Rohit Sharma. And this back and forth just hasn't Has- worked. You have not stuck to your बिल्कुल। aggressive philosophy. बिल्कुल। You've gone back and forth. तो आपको समझ में नहीं आ रहा था और आप ये भी कहते हो कि आप दूसरों की नहीं सुनते हो, आप बोलते हो हमारे यहाँ पे जो खिचड़ी पक रही है वो हम ही पका रहे हैं, हम किसी और को नहीं बता रहे हैं. बट हैविंग सेड दैट फिर आप इफेक्ट भी होते हो. अगर आपको इतनी अपनी खिचड़ी पकानी थी दिनेश कार्तिक के साथ तो पूरे वर्ल्ड कप तक पकाते. एंड में जब डीप एंड में आपको किसी से स्विमिंग करानी थी आपने ऋषभ पंत को फिर वहां पे कुदा Last 2 दिया. मैचेस बिल्कुल और उसके बाद कभी दिनेश कार्तिक खेलेंगे नहीं इंडिया के लिए. Yeah. Another super chat. Thank you Nikhil for your super Thanks, chat. Nikhil. Pant, Siraj, Sundar were heroes in the Brisbane Test 2020. Absolutely. With fierce approach, they should be back. Umran has space. He should be groomed. Seniors shouldn't return. I think आपको एक Nikhil, you need a certain balance of seniority and youth. अभी जो हमारा T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड था उसमें 7 प्लेयर्स थे जो 32 साल से ऊपर थे. 7 players 32 and above. I think that's a bit too much. It's a young man's game, T20, but that said, you need someone with seniority, right? I think Virat Kohli has done the job so well for so many years. जो role Virat Kohli ने Asia Cup के बाद से निभाया, I'm saying the role was the same, but he found his groove. You need that kind of seniority. Do you need seniors like Rohit, Bhuvneshwar, Virat, KL, Shami, Ashwin, Karthik? Do you need that many seniors? Unfortunately, I just think नहीं, आपको वो balance चाहिए. Let Virat Kohli bat at 3 or let him open, but then you need to sort out Rohit Sharma and KL Rahul. They're very experienced when it comes to IPL. Rohit's played 80-20 World Cups, but is he the best person to lead this team through the next phase? I don't think so right now. Is KL Rahul someone who's in a good space right now? I don't think so, right? You just need to find that right balance, Play Siraj if you feel, play Sundar, play Umran Malik, but then give them that rope. I think in the last 12 months, what this team cannot be faulted is not giving enough players a long rope. They gave Avesh Khan a long rope. Sorry, I just have to go. हाँ, they gave Avesh Khan a long rope. वो नहीं चले, आपने कहा कोई बात नहीं. पंत cannot say कि मुझे मौके नहीं मिले. श्रेयस अय्यर cannot say कि मुझे मौके नहीं मिले. मोहम्मद सिराज cannot say कि मुझे मौके नहीं मिले. आपको थोड़ा वो बैलेंस ढूंढना पड़ेगा. Nikhil, that's my answer. You need that right balance between seniority and youth. Play Ishan Kishan, play Sanju Samson, play Huda, but then put a Surya in the middle, put a Virat Kohli in the middle, play an Umran Malik, play an Arshdeep, but then have a slightly more senior bowler. Is that Bhuvneshwar right now? Maybe for a while, but if Bhuvneshwar Kumar is not playing the next T20 World Cup 2 years from now, फिर तो उन्हें फिलहाल खिलाने से ज़्यादा नहीं बनता. Let Bumrah come back and be that senior bowler. What do we have here? Rahul is saying, I think this time we need to look at the systems, the board, and the processes, not the players. You need the player. I'm saying, ये system and all, system is good. System is very good. You have the IPL. लेकिन दोस्तों, जब से IPL शुरू हुआ 2008 में, फैक्ट ये है कि इंडिया एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी. क्यों? तो क्या IPL एक्चुअली आपका फीडर सिस्टम है? आईपीएल की अहमियत क्या है? जब आप आईपीएल के शुरू होने से 15 साल से 14 साल से आप T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते हो. Look at the coaches. There's a question here saying, why is VVS Lakshman there? Why on earth is he there? I don't know. The board has to answer this. It comes back to whatever Meha and I were discussing throughout the live stream. Get a stronger selection committee, first of all. Get a more transparent process, where answers. You are accountable to the public. ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझ जैसे मीडिया वाले को जवाब दे, लेकिन आप लोग cricket paying public, the public needs answers why so and so was not picked. Was Bumrah actually injured? Was he fit? ये क्यों हो रही है? ये revolving doors हम बहुत सालों से देख चुके हैं. जहाँ तक selection की बात हुई वनडे में, टेस्ट में, और आजकल पिछले कुछ सालों से T20 में, you just need to, if you're talking about support system, if you're talking about processes, it should be clear कि भाई हम एक टीम बिल्ड कर रहे हैं अगले 2 साल तक T20 वर्ल्ड कप के लिए. विराट कोहली made a team which would give the team the best chance to get to the WTC final. और 5 साल तक विराट कोहली की टेस्ट टीम नंबर 1 टीम थी. बहुत सही प्रोसेस था, पर उसका नतीजा क्या था जब आप WTC फाइनल पहुंचे 2021 में और आप कंडीशंस नहीं पढ़ पाए, आपने गलत टीम चुनी. वहां केन विलियमसन ने 5
सीम बॉलिंग ऑप्शंस चुने, आपने केवल 3, आपने 2 स्पिनर, न्यूजीलैंड ने स्पिनर चूज नहीं किया, आपने 2 स्पिनर्स खिलाए उस पिच पे जो गीली थी, जहां पे बॉल ग्रिप नहीं हो रही थी. सो स्मॉल थिंग्स, दिस हैज टू बी एड्रेस्ड more than anything else. Who am I has given a super chat. Thank you. आपका सवाल क्या है? Is your सवाल who am I? वो तो आप ही बता पाएंगे दोस्त. Nikhil is saying Deepak Chahar can be a good replacement for Bhuvi. Absolutely. I'm surprised he's not there. Bring in, let Bumrah come back. Let Deepak Chahar play. Ravi Bishnoi ko lao, yaar. Bishnoi ko lao. Ram Kaluri is saying same old story. Perform in bilaterals and choke in. Absolutely. वही भाई. कोई पॉइंट नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता कि 12 महीने तक आप बायलैटरल बुलीज बने और आप दोबारा फेल हो T20 वर्ल्ड कप में. SR movie saying, dear, do you all really know who King Kohli is? I took Virat Kohli's first interview, so if anyone here knows what Virat Kohli is, वो मैं हूँ. मैं 3 बार इनका इंटरव्यू ले चुका हूँ, तो एब्सोल्युटली विराट कोहली हैज अ जॉब नाउ. विराट कोहली इज योर एंकर. और मेरा ये मानना है कि विराट कोहली को ओपनिंग करना चाहिए. 4-5 बार हम इस टीम पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक यानी कि रोहित और राहुल में से एक को हटा दो. लेट विराट कोहली बैट द सेम वे. Don't change anything. Just change the number. Have him back as an opener. Maybe put Suryakumar Yadav at 3. अगर टीम मैनेजमेंट, अगर सिलेक्शन कमेटी को लगता है कि विराट कोहली 3 पे बेस्ट है, तो कोई इशू नहीं. विराट को आप 3 पे खिलाइए, आप स्काई को 4 पे खिलाइए. लेकिन फिलहाल ये जो जोड़ी है रोहित और राहुल की, ये सस्टेनेबल नहीं है T20 वर्ल्ड कप में. एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, सुपर 12 टीमों में से India were the worst in the power play, 6.02. It was a big factor why the team ended up being thrashed by England that day, 62 for something after 10 overs. Rahul and Rohit फिलहाल are not a sustainable opening pair. आप बेशक कोहली से ओपनिंग कराइए, कोहली आराम से वो रोल निभा सकते हैं. आप उन्हें 3 पे डालिए, but fix the openers. Play Ishan Kishan, play Pant, play Samson, but back these guys. ऋषि, रोहित was never an opener. He should go back to his original position. पर कहां पे? रोहित शर्मा 35 साल के हैं, 36 साल के होंगे कुछ महीने में. आपको ऋषि, आपको कहां लगता है रोहित को खेलना चाहिए? मिडिल ऑर्डर में? मतलब you have Surya, you have Virat, you have Samson, you have Iyer, you have Huda, you have Pandya, you have enough middle order options. I just don't think right now Rohit Sharma at 35 can bat anywhere but opening. That's just my view. आप लोग बताइए क्या हो रहा है? हिमांशु सिंह, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ भी बायलैटरल खेलेगा तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ज्यादा तंग नहीं करेगी इन ओपनर्स को. अगेन आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पे इतने लोग जुड़ चुके हैं, और थैंक यू फॉर 218 लाइक्स. क्या बात है दोस्तों. आई वाज गोइंग फॉर 150, आप लोग ने 220 लाइक ठोके. कमाल की बात है, शुक्रिया दोस्तों. यूट्यूब का एल्गोरिथम केवल इस लाइक सिस्टम से चलता है. आप लोग लाइक ठोकिए, तभी इस चैनल और इस लाइव स्ट्रीम, इस वीडियो का रीच ज्यादा है. So, coming back to it, what do you think? Do you think India should be bilateral bullies, or should they be judged on the basis of what they've done at T20 World Cups, right? So, if क्या फायदा जब आप श्रीलंका को घर पे बुला के हराते हो 3-0, आप वेस्ट इंडीज को 3-0, 4-0 हराते हो, आप इंग्लैंड को हराते हो 3-0 या 2-1, आप आयरलैंड को हराते हो 2-0, बट फिर आप वर्ल्ड कप जाके दोबारा वही गलतियां दोहराते हो. How do you feel? You guys let me know. Do you judge the team just by how they perform against Pakistan? Well then, going by World Cups, India have dominated Pakistan for 30 odd years. They lost to Pakistan in the first match of last year's T20 World Cup, but then they went and beat them in a fantastic match. So it's not about how India plays Pakistan and how their bowlers bowl. Let them play bilaterals. But do we really actually care about bilaterals? Do you think आप लोग जो मेरे साथ स्ट्रीम पे जुड़े हो, क्या आपको लगता है कि इंडिया नंबर 1 T20 टीम रैंकिंग जो है, do you think they deserve it? I don't. You let me know how you feel. Pranav, don't you think we should prioritize those players who are hitters and then can anchor when needed rather than looking for anchors and ask them to hit? भाई मेरे हिसाब से T20 फॉर्मेट में एंकर शब्द होना ही नहीं चाहिए. If you want an anchor in T20, then you are playing the wrong format. But that said, let Virat Kohli be the closest to that anchor role, because he's someone who accelerates the longer he's there. Let the other hitters bat all around him. Let Ishan Kishan open. Let Deepak Huda open. Let anyone open. But then let Virat Kohli be that person who bats deep. We've seen he struggles against spin, but he's so good against pace. He finishes innings far better than anyone
except for Hardik Pandya. तो define a role. Virat, आप 3 पे खेलो, आप 1 पे खेलो, opening कराओ, but then get people going around him. You cannot have too many players going at 130, 135. Let Virat Kohli be that player who bats at a strike rate of 135 and let the other guys go around it. Rishabh Walia, what do you think India को पाक जाना चाहिए for Asia Cup? Again, the 14 years नहीं होगा भाई, नहीं होगा. Dr. Parichai Soni कहते Virat will kill on slow West Indian tracks. Virat Kohli has come back so strongly. There's no doubt. He is in a very good zone. मेरे ख्याल से इस देश के सारे क्रिकेट प्रेमियों इतने खुश होंगे विराट की वापसी देखकर. मैं वही कह रहा हूँ, आप उनसे ओपनिंग कराइए, आप इनसे 3 पे खिलाइए. मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह चुका हूँ, मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ कि मैंने खुद कहा था कि विराट को T20 स्क्वाड में नहीं होना चाहिए जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं. But I said this guy has 3 to 4 years of international cricket left in him, and I am sure, just like I said, that Surya will dominate this T20 World Cup. मैं दोबारा कह रहा हूँ कि Virat Kohli will have a bumper one-day World Cup next year. Virat Kohli loves the one-day format. He loves the Test format. I think, I mean, there could be another 12 to 15 international hundreds left in Virat Kohli. देखिए इसी बात पे कमेंट आया, मार्क माय वर्ड विराट गोना प्ले नेक्स्ट 2 T20 वर्ल्ड कप एंड 2 ODI वर्ल्ड कप्स. I mean, then you're talking about no, 2 ODI World Cups. You're talking about Virat Kohli playing for another 6 years. Yeah, in 6 years he'll be nearing 40. भाई वो थोड़ा मुश्किल है. Definitely he'll play the next. I think he has 2 more one-day World Cups, but to push himself across Test cricket as well as 2 one-day World Cups and 2 T20s, वो भाई थोड़ा मुश्किल है. वैसे आपके सवाल अच्छे हैं. आपका नाम बताइए. I don't like people who are too embarrassed to put their real name. I want to know your real name. जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मैं लोग से पूछता हूँ, यार आप लोग अपना खुद का नाम इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? कि आप embarrassed हो अपने नाम से? Let me know. SR Movies, you've asked some very good questions. I love your comments, but I want to know your real name. Don't be embarrassed. यार, share your real name. कमरान सलमा आयरे सिंह, कैन वी गो विद विराट टू ओपन? बिल्कुल. ये सवाल तो मैं ऑलरेडी 10-12 बार इस स्ट्रीम पे मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूं. विराट कोहली को ओपनिंग ही करना चाहिए. क्या विराट सचिन का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं? एक टाइम था ऋषभ वालिया जब मैंने कहा था कि भाई ये बंदा उनके रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकता है, but the 2 years of struggle of Virat Kohli had, it will take a superhuman effort to come back. I think across 3 formats Virat Kohli could get at least 1200s across formats, but at some point क्योंकि वो 34 के होने वाले हैं, he's going to have to give up one format. So I don't know क्या होना चाहिए. क्या कुलदीप को 2013 वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? बिल्कुल. आपके रिस्ट स्पिनर्स अगले 2 साल तक कुलदीप यादव और मेरा सबसे फेवरेट स्पिनर रवि बिश्नोई होना चाहिए. यादव है ना? यादव है भाई. जब तक यादव है तो सब मस्त है. अच्छा, SR मूवीज, आपका नाम अंकित है? ये हुई ना बात यार. आप लोग क्यों किसी और डीपी, किसी और की फोटो, किसी और नाम से अपना नाम डालो यार. मेरा चैनल का नाम है जेमी ऑल्टर. उसमें मेरा फोटो है. उसमें मेसी का फोटो नहीं है. उसमें जॉन सीना का फोटो नहीं है. उसमें जॉनी ब्रावो का फोटो नहीं. उसमें आप जो हो, आप बेझिझक, बेखौफ, don't be embarrassed. Ankit, your name is Ankit. It's a fantastic name. I want to see Ankit's photo. I want to see Ankit commenting, not SR movies and all. Yeah, don't be embarrassed in who you are. Let me know who you are. I am here letting you know who I am. I love to see my followers, my viewers, my friends here put their real name and their real photo. अगली बार आओगे आप, मुझे अंकित का नाम देखना है और मुझे अंकित का तस्वीर देखना है. Okay, Kamran Salma Ahil posted, look for better pace attack for matches in Sena countries. Yeah, look, I think we have great bowling depth. Of course, Bumrah gets injured. It's unfortunate. Bhuvi had a very good year. He's our leading wicket taker this year in T20Is. But you know, he's not getting any younger. अगर भुवनेश्वर कुमार, दोबारा मैं कहूंगा और आखिरी बार कहूंगा इस टीम पे, अगर भुवनेश्वर कुमार 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अगर वो आपके प्लान में नहीं है, फिर तो आप उन्हें शॉल पहना के, उन्हें प्यार से, सम्मान से, इज्जत से आप उन्हें रिटायर करिए. You need to build a team for the 2024 World Cup. And if you feel कि भुवनेश्वर वहां पे नहीं होंगे या कोई भी खिलाड़ी फिलहाल वहां पे नहीं होंगे, आप उन्हें ज्यादा क्रिकेट मत खिलाइए. Pranav is saying, I think bilaterals are important to win, but also we as fans should also be ready to lose the battle in order to win the war. It's a great line. It's a great line.
you need to play bilaterals to get more confidence, to boost players form, to see what it is. But मेरा ये मानना है दोस्तों सालों से कि आपको लोग याद करते हैं आपकी ट्रॉफी से, आपके टाइटल से। ये नहीं कि श्रीलंका को 3-0 हराया, बांग्लादेश को 3-0 हराया, फलाना टीम को हराया, नहीं, वो सब चलता है, उससे स्टैट्स बढ़ते हैं। लोग अभी भी याद करते हैं कि भाई जोगिंदर शर्मा ने वो विकेट लिया था, श्रीशांत ने वो कैच लिया था, आरपी सिंह ने वो बॉल डाला पॉलक को, युवराज ने ब्रॉड को 6 छक्के मारे, सचिन ने ये किया, धोनी। People, we cricket fans, we remember the big moments. I don't remember too many bilateral series. I still remember Rishikesh Kanitkar in the third match of that best of 3 Independence Cup trophy in 97-98. उन्होंने जो सकलेन को मारा, मैं अब तक वो याद करता हूँ यार, क्योंकि ना वो एक टूर्नामेंट फाइनल में आया था। मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ ये फिलाना ढिमकाना बायलैटरल्स को। दिनेश कार्तिक को हम याद करते हैं 17-18 साल की करियर में एक निदाहास ट्रॉफी के लिए, not what he did in the middle. Teams should be judged more. I'm not saying bilaterals are not important. Teams should be judged more on what they do in big tournaments. चाहे वो एशिया कप हो या वो किसी ट्राई सीरीज के फाइनल हो या वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हो, more than these bilaterals. That is just my view. Himanshu saying my favorite T20 player is Liam Livingston. Fantastic, yeah. भरत कोटवानी कह रहे संजू कब तक नहीं खेलेगा सर, पंत की जगह उसको परमानेंट कीपर बनाना चाहिए। बिल्कुल, मैंने भी पहले कहा इस स्ट्रीम में ऋषभ पंत का फिलहाल T20 11 में कोई जगह नहीं बनता। आप सैमसन से कीपिंग कराइए, आप सैमसन से ओपनिंग भी कराइए। सैमसन राइट नाउ इज अ फार बेटर T20 कीपर ऑप्शन देन ऋषभ पंत। ऋषभ पंत मेरे फेवरेट कीपर हैं आजकल के टाइम पे, मैं उन्हें बहुत बहुत पसंद करता हूँ, बट उन्होंने आज रायता खिलाया एक बार फिर से। उनके पास एक बेहतरीन मौका था आज, पर 13 गेंदें खेल के थोड़े टफ कंडीशन में वो सिर्फ 6 रन बना पाए, गंदे शॉट खेल के आउट हुए। ऋषभ पंत को मैंने बहुत बहुत बैक किया। मेरा ये मानना है कि वो भारतीय क्रिकेट के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट टेस्ट कीपर बैट्समैन है, सारे कीपर से अच्छा, और वनडे में इनका समय आएगा, पर फिलहाल T20 11 में ऋषभ पंत की जगह नहीं बनती। Who am I? Sanju, thank you for the super chat. Who am I? What's your name? Yeah, I want to know your real name, bhai. Thank you for your 40 rupees super chat. Love you, brother. But what's your real name? I want to know your real name. Sanju should be in team instead of Pant. बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ. I just said that for the third time on this stream कि पंत की जगह संजू सैमसन को जानी चाहिए. Manish saying today was the boring T20 game. Yeah, today I was watching Kane Williamson bat. So was Meha, और हम कहते हैं यार, how has Kane Williamson managed to make a T20I as boring as a bilateral one-day match? मतलब intent नहीं था यार उस भाई में आज. Very strange. चलिए, last couple questions because I have to do an audition for a web series in about 2 hours from now. विमल कुमार कह रहे हैं सर पंत 65 T20 खेल चुका है, एवरेज सिर्फ 22 की. Again T20s में ना दोस्त विमल एवरेज की बात नहीं है, आप उनकी स्ट्राइक रेट देखिए, आप उनके स्कोर्स देखिए. अगर एवरेज 22 है, हाँ could be better, but T20 is more about strike rate. But in the case of Rishabh Pant, फिलहाल वो अपनी जगह कायम नहीं कर पाए 65 T20s के बाद. Maybe it's bad management, maybe it's shuffle order, but it comes down to playing too many shots per one. Meha's back. We have 2 more minutes left here. Ankit saying hi, Sachendra saying best of luck for audition. Thank you. बहुत बड़ी वेब सीरीज है. मुझे 8:30-9 तक इनको भेजना है वो 2 सीन्स. You want to take a few questions because I'm. No, you take it. I've just come back. No, I'm saying exit was very abrupt. It's been almost an hour. We got 315 likes. Thank you, दोस्तों. Thank you so much for all the likes. Like button आप लोग smash करते रहिए. Like button आप लोग ठोकते रहिए, क्योंकि YouTube का algorithm बहुत importance देती है इस like को. Thank you guys. Love you all. Final couple questions. भरत से उमरान को खिलाना चाहिए. बिल्कुल. We've already, शायद आप late जुड़े हो stream पे, हम already कह चुके हैं कि उमरान मलिक को बिल्कुल खेलना चाहिए. Last question from Dr. Parichai Soni. We need a Jamavat to make Pant member his powers. Jamavat क्या होता है? जो भी है, आप बहुत से सहमत हो. We need to get the best out of Rishabh Pant. बिल्कुल. Thank you all for your time. आपने हमें तकरीबन 1 घंटा दिया है to both of us. We've had a blast answering your questions. Ankit, who was MS Movies, I want to thank you to you for giving me your real name. Who am I? I want to know your real name next time you're on the stream. अच्छा, जामवंत from रामायण. Okay, हाँ, I was wondering जाम, ठीक है. हाँ, समझ गया. Thank you. Thank you. I was like जमावंत, हाँ, जामवंत. दोस्तों, thank you. This is Jamie, Meha, Rishi. Thank you. Who am I? Thank you for your 2 super chats, and thank you
for letting us know your real name. Love you all. Hope you all have enjoyed the stream. Please come back and see us the next time we do a live. Sunday का दिन है, मुझे audition करना है अच्छा और कुछ खाना भी खाना हाँ, खाना है. Thank you all. Thank you all so much. Thank you. Love you to LJRR. आपने मुझे अपना नाम बताया था पिछली बार, मैं भूल गया, माफी चाहूंगा. Next time you're there, I want to know. I want to be reminded of what your real name is. Thank you all so much. Goodbye. Enjoy the rest of your weekend and have a great week, all of you.